constant coefficient is 25, here 40, and del 2z over del x or del y plus 16, and what is t is del y square. Okay, that equals to 0. Okay, so if we define our operator d is del by del x and our d1 is del over del y, so this first order linear partial differential equation with constant coefficient, you can write like this: d square minus 40d d1 plus 16 d1 square, that equals to 0. Or you can write this: this is the function of d and this d and d1. Okay, this is d and d1 of function that is z. Okay, so this operator with z, this equals to 0. So this equals to 0. Okay, and here this is this functional form fxy, that is 0. This means this is a homogeneous, okay, linear partial differential equation with constant coefficient. So this implies your particular integral, in this case, that equals to 0 here. So you have to find the general solution. So this only you concerned about what is your complementary function. So for complementary function, we have to find what is auxiliary equation of this. So what is the auxiliary equation? So auxiliary equation is you can write here 25 m square by using d equals to 1 and d equals to m and d1 equals to 1. So this becomes 40 m plus 16, that equals to 0, and you have find what is your m. Okay, so on solving that here, you can find what is the value of m. So this is 4 by 5 and 4 by 5. Okay, so what is the general solution? So hence the general solution is, what is general solution? So you know that z equals to we need to write complementary function. So we have first function and y plus 4 by 5x, and these roots are same, so this becomes x phi 2, and this is 4 plus y plus 4 by 5x. Okay, and here this phi 1 and phi 2, these are arbitrary functions. Okay, so here these two are arbitrary functions, and you can find here this is your basically complementary function. Okay, so pi is 0 and complementary function is this thing. We can write this notation. You know that if the roots are repeated roots, then in that case this phi 1 plus x. Okay, if suppose there are another roots 4 by 5, so then you can write x square phi 3 of that thing. Okay, so similarly you can find some problem and their solutions. Okay, so if we have some problem in which this fxy part is non-zero. Okay, this means for non-homogeneous first order partial differential equation. Okay, so for that how to solve that problem? Okay, so in next page okay, so okay, so we can write here okay, so we take a simple example here. Okay, and theoretical part we will send you on your WhatsApp group. Okay, so solve if we write d3 plus 6d square d1 after rearranging this first order partial differential equation in terms of d and d1 operator. So if suppose the reduced partial differential equation of this type e to the power suppose 5x plus 6y. Okay, so here we can solve quickly, and here we are interested to this non-homogeneous part. Okay, so what is auxiliary equation? So auxiliary equation is in this equation that equals to m cube plus 6m square plus 11m minus 6. Okay, that equals to 0. So this implies what is the value of m here? So by hit and trial, you can put here m equals to 1 here. So m equals to 1, 1. So this becomes 6, and this becomes okay 12. So m is equals to
Okay, 1, 2. If we're putting 2 here, so 8 and 28, 3. Okay, so I think some प्लस माइनस का कुछ इसमें कुछ नोटेशन है, प्लस माइनस होना चाहिए कुछ इसमें. Okay. So I think if this becomes minus sign, okay, तो प्रॉब्लम में थोड़ी सी मिस्टेक है, हमें लगता है यहाँ पे हम माइनस ले लें. हाँ, ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी. Okay. So suppose this is minus here. Okay. So if we take 1 equals to this 6, 6, 12 and 1, 11 and 12. So m equals to 1 is your roots of that equation. Okay. And if m equals to 1, then you dividing that and then you find quadratic equation and then solve that equation. So you can find m equals to 1, 2, 3 are the roots of this equation. Okay. So therefore, what is the complementary function? So complementary function is phi 1 y plus m1. M1 means 1 into x plus phi 2 y, because these three are distinct ones, so you can write in this form phi 3 y plus 3 of x. Okay, so this is simply phi 1 y plus x, phi 2 y plus 2x, and phi 3 y plus 3x. Okay, so this is your complementary part. So we are interested to find this non-homogeneous part, and here this is the particular integral. So what is a particular integral? This is the f of d d1, and this is operate on that function fxy. So this is equals to 1 over, this is d cube, 6d square d1. This is minus sign. Okay, so we can write here this is minus sign. Okay, so this 6d square d1 plus 11d d1 square minus 6 d1 cube, and that operate on this function, and that function is this thing. Okay, so by using formula, you know that what is the value of this function. Okay, so here you can solve this function and putting here what is the value of a here. So d equals to a, that equals to 5, and what is d1 equals to b, that equals to 6 here. Okay, so on putting that term, so we get here this 5 cube minus 6 of okay, so 6 of this 5 square into 6 plus 11 into 5 into 6 square minus 6 into 6 cube. Okay, this and e to the power 5x plus 6y. Okay, on solving this, you can find what is the solution. So this is equals to minus 91 e to the power 5x plus 6y. So this is the solution of that problem. Okay, so what is the general solution? So if we find the general solution, so this equals to CF plus PI. So CF portion this thing and PI is this thing. So now adding these two, you get the final result. Okay, so here if there is a function is exponential function, then you can find easily what is your particular integral. Okay, so now if we consider suppose another type of problem, and okay, so now in next page okay, so what is the working rule? For finding particular integral, that is pi, where this function fxy, suppose if this function is of type ax plus
by. Suppose if this function is like this linear combination of this linear function. Okay, so when linear function means x and y के linear combination हो इस form में हो, चाहे exponential हो, logarithmic हो, okay, any polynomial हो इस form में. Okay, तो इस केस में हमें क्या करना है, when this f of ab on putting this is not equals to 0 and f of d and d1, this is homogeneous function of suppose degree n, this, so then we have the particular integral, and that integral equals to 1 upon f of d1 d1. This equals to this phi of ax plus by, because this fxy equals to this thing. Okay, so this equals to if this is non-zero, so this becomes f of ab, and this equals to integral, multiple integral, okay, of your dv. Okay, so this is your function. If you're putting this is v, and this is of dv. Okay, where this v equals to ax plus py. Okay, so here you know that you're using this multiple integral. So here this contains a multiple integral of order n, because if this is a homogeneous of order n. Okay, so here you can write here. We can write here. Note that the right hand side this contains a multiple integral. This contains a multiple integral of nth order. Okay, so this is due to this nth order homogeneous equation. So that's why this is n multiple integrals there. Okay, so second case, and the second case when this f of ab that equals to 0, if this f of ab that equals to 0, then in that sense we have this particular integral we can write that is in the form of d minus a d1, and this is the nth order, so this becomes n of phi of this ax plus by, because these are the roots. So here we take this a and b, because d equals to a and d1 equals to b, so this ba minus ab that equals to 0, so that's why f of a equals to 0. Okay, and this of nth order that equals to x to the power n over bn factorial n of phi of this ax plus by. Okay, so these are basically two formula for we have to solve that thing. Okay, so here if we take an example and try to see that part, this second part. Okay, so in next page we take a problem in which we discuss the second part. So next page here, if you have to solve this, suppose 4r minus 4s plus t, and that equals to suppose 16 log of x plus 2y. So this is a function of a plus by type. Okay, a plus by, something x plus something y. Okay, so here the given equation, can be rewritten as, कैसे लिख सकते हो आप? This becomes 4r is del 2z over del x square minus 4s del 2z over del x del y, t is del 2z over del y square, that equals to 16 log of x plus 2y. Okay, so this means you have 4 of d square minus 4 d1 plus d1 square. This of z that equals to 16 log
x plus 2y. Okay, so what is the auxiliary equation here? So auxiliary equation is simply we take this equals to 0, and then our auxiliary equation is minus 4m plus 1 equals to 0, and this is simple equation. Here we find what is the value of m. Okay, so this is m. So what is your complementary function? So complementary function is, so any function, say 5. Okay, so here we know this is 5. Okay, so we use here, this is say psi 1 any function. Okay, or you can take, okay, we can use phi 1 because here we have not assigned that this as a phi. So this is a phi 1 y plus half x, and since these roots are repeated roots, so x of phi 2 y plus half into x. This is a complementary function. Okay, so you can write this is in the another way. This means you can write this in this form, x plus 2y form. Okay, if we are interested to write in this form x plus 2y, so we can write here y phi 1, and here you can write here half of, and this is x plus 2y. Okay, so no problem is there. Okay, we can write here half and x plus 2y. Okay, and similarly plus x and phi 2, here we can write half x plus 2y. Okay, so here we can write in this form. Okay, and if this is this function is suppose your psi 1, and suppose this function is your psi 2 with the another function, so your complementary solution is right like this, x plus 2y and plus x psi 2, and this is x plus 2y. Okay, where psi 1 and psi 2, psi 1 and psi 2 are arbitrary functions. Okay, so these are arbitrary functions. Okay, so either you can stop there at this step, you can stop there. Okay, no problem. Okay, here we are something redesign of this phi 1 phi 2 in this form, so that's why we can assign psi 1 and psi 2. If you are not interested to write this in this form x plus 2y, so okay, so you have to stop there. Okay, तो आप यहाँ पे आप इसको रोक सकते हैं, ये आपको फंक्शन हो गया. हाँ, अगर आप चाहें तो इस फॉर्म में करने के लिए तो आप यहाँ आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज यहाँ तक सफिशिएंट है, no problem. Okay, so what is your particular integral? So now particular integral, that integral is 1 upon f of d1. Okay, of your function, and here your function is fxy. So this is your second order, only second order this problem, okay, of this x plus 2y. So here we use the second order integral. Okay, so this means 1 over f of ab, and here this of dv, and this is dv. Okay, so what is the value of fab here? So what is the value of fab? So if we are interested to find what is the value of fab, so fab is basically here we have to put here d equals to a, and 4a square minus 4ab plus b square. So this is your value. Okay, and here if we are compare with ax plus by, so what is a here? So here if we comparing this becomes a equals to 1 and b equals to 2 here. So now if you're putting here a equals to 1, so 4 of 1 square minus 4 1, b is 2 plus 2 square. So what is the value? 4 minus this becomes 8 plus 4, that equals to 0. So here fab is 0. Okay, so if fab is 0, then we have a formula. Since here fab is 0, then we use the formula for that, and this formula is equals to 1 by this is this is b d minus a d1 to the power n, and here this is the second order, this means 2. Okay, and the double integral of okay, and then x to the power n. So you can write what is your x to the power n is x square. Okay, x to the power n. again. तो उसमें 6d minus ad1 है. 60 कहाँ पे सर डिनोमिनेटर में सर, नीचे सबसे नीचे.
यहाँ हाँ सर 6d माइनस 6d बी माइनस सॉरी सर 6d ओके 6d माइनस ad1 और अब ये अभी फार्मूला हमने लिखा ना, फार्मूला हमने लिखा, फार्मूला आपको पता है कि f अगर वो f a b 0 हो जाए तो आपका जो फार्मूला है दैट इज 1 अपॉन b b d माइनस a d1 ऑफ nth ऑर्डर के हैं तो फॉर n ऑफ योर फंक्शन दैट इज ax प्लस by this equals to x to the power n upon b to the power n factorial n of phi of ax plus by. ओके तो यहाँ पे हम जो ये लिख रहे हैं दिस इज दिस फंक्शन दिस f of d of fxy and here fxy is okay here 16 is there okay so we can write here this 16 of that thing okay so here we can write here this 16 so we can write here 16 into this thing okay 16 into this thing 16 of that so this is 16 into this equals to x square because n is 2 and here b square means b equals to 2 so this means b square and factorial n means factorial 2 okay and what is your phi is log of x plus 2y so on solving that here 16 and here 2 to 4 to 8 so if we cancel this becomes only 2 here so 2x square okay 2x square this and this equals to okay so यहाँ पे कुछ थोड़ा गड़बड़ है इसको हम ठीक ही है पर हम लिखने का तरीका थोड़ा गड़बड़ हो गया हम इसे थोड़ा सा okay so particular integral in that sense we equals to particular integral this equals to 1 upon 2d minus d1 square of 16 log x plus 2y this equals to 16 into x square upon by using this formula okay so we can write here this thing x square b square means 2 square into 2 factorial and log of x plus 2y this becomes 2x square log x plus 2y ओके तो यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल जो है ये फाइनली ये चीज आएंगी आपकी और यहाँ सी एफ आपने ये निकाल लिया तो हमने इसलिए किया कि ये x plus 2y सेम हो इस फॉर्म में ओके तो देयरफॉर योर फाइनल सॉल्यूशन इज दिस CF एंड दिस PI तो आप दोनों को ऐड कर लें दिस इज योर CF एंड दिस इज योर PI एंड जनरल सॉल्यूशन इज दिस प्लस दिस योर फाइनल दिस इज योर फाइनल सॉल्यूशन ओके ओके तो एक प्रॉब्लम और हम ले लें और ओके इफ आवर प्रॉब्लम इज ऑफ टाइप सपोज हम ऐसा कुछ ले लें जहाँ पे कि d हमारे वो पॉलिनोमियल की फॉर्म में हो तो चलिए ओके तो नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं कुछ फॉर्मूले और हैं तो उसको नोट कर लेते हैं सो नेक्स्ट पेज so method of finding particular integral of non-homogeneous partial differential equation with constant coefficients. Okay, so here if f of d and d1 this is your
function of z. Okay, so this is your problem. Okay, this is your problem. So here, case 1 is when this function is of exponential type and f of AB is not equals to 0, then the particular integral we can write 1 upon f of d d1 that equals to e ax plus by. Okay, so I think ये तो हमने कराई दिया था. f of ab e to the power ax plus by. Okay, and case 2, when this function is of type sine or cosine function like this, sine or cos, this type of function, then our particular integral is 1 upon f of d d1, and this is sine of ax plus by or cos of ax plus by. So this, which is calculated or evaluated by putting, you know that this d square equals to minus a square as usual in ordinary differential equation, and d1 square equals to here this one more thing here d1. So okay, this becomes this thing. And what about d and product of that? That is also quadratic term here. This becomes minus of ab. Okay, so here d square equals to minus a square, d1 square equals to minus b square, and product of this is also quadratic term. This is minus of ab. Okay, and case 3rd, when this function is of polynomial form x and yn, then the particular integral means 1 upon f of d d1 of this x to the power m y to the power n. This can be evaluated by using binomial expansion. You already know how to solve this binomial expansion, and we solve this problem. Okay, so in next one, this is case 4. When case 4 is there, the last case, when this function fxy, this fxy function, if this is if any function v of xy and e to the power ax plus by, and this is function of x and y. Okay, so we can write this v be any function of xy and exponential of ax plus by. Okay, so then the particular integral in that sense, this equals to 1 upon f of d d1 of this v of xy exponential of ax plus by is equals to e to the power ax plus by as usual in ordinary differential equation. And here you write this f of, this is d plus a and d1 plus b of this function v, which is xy. Okay, so these are some formula from we will use that formula and try to solve our first order non-homogeneous linear differential equation. Okay, so here one last question we will discuss today. So next page. सर एक मिनट रुकिए, सर एक मिनट रुकिए. हाँ रुक गए. हो गया सर, हो गया. Okay. So next page. If we solve del 2z over del x square plus 5 del 2z del x del y plus 6 del 2z over del y square, and suppose this equals to y minus 2x. Okay, so
what is the auxiliary equation? So auxiliary equation is m square 5m 6 equals to 0. So 5 ones 5 or 6 and 1. Okay. So I think this sign is something wrong here. So here we take minus sign. Okay. So 6 minus t 3 minus 2. Okay. So here m equals to minus 2 and minus 3. Okay, so what is your complementary function? So you can write directly phi 1 y minus 2x and phi 2 y minus 3x. This is your complementary function. Okay, so now we are interested to find what is your particular integral. So this becomes 1 over f of d d1, and this is function fxy. So this equals to d square minus 5d d1. Okay, and this is 6 d1 square. So this into y minus 2x. Okay, this is your function. So we can write here in this form. सर ये जो रूट्स है वो 2 3 होना चाहिए ना? रूट्स हमारे क्या होने चाहिए? 2 and 3 होने चाहिए. ओके. तो रूट्स आर 2 and 3. ओके, सो हमने क्या लिख दिया? हमने लिख दिया इसको -2 -3. तो -2 -2 दिस बिकम्स 2 and 3. और अगर हम उसमें करें ओके, सो रूट्स आर this is 2, this is 3. Okay, so this becomes y plus. I think this is correct. Okay, because -2 m minus 3 to m minus 2 m minus 3. Okay, so this is roots. Okay, so this is your complementary function, and then you find what is your this value. So this equals to basically this is d minus मेरे ख्याल से है this is d minus 2 d1 and d minus 3 d1. Okay, so if we factorize this, this becomes d minus 2. This from d square minus 3 minus 2. This from 5d square, and this is okay. So this is the formula, and y minus 2x minus 1. Okay, तो ये चीज है आपके पास. अब आप क्या करेंगे इसको? अब आपके पास दो ऑपरेटर हैं, तो आपको करना क्या है? d minus 2 d1 एक आपने लिख लिया बाहर, एक को आप अंदर ले जा रहे हो, दैट इज 1 over d minus 3 d1. यूज किस में कर रहे हैं? y minus 2x. हेलो सर, वहाँ y minus 2x कैसे आ गया सर? y minus 2x यही है ना, y fxy. ओके सर, ओके सर. This is your fxy that equals to 1 upon y minus 2x, or you can write y minus 2x to the power minus 1. बात ठीक है ना? ओके सर. ठीक है ना? ठीक. ओके, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है? इसको आप यूज कर लें और इसको सॉल्व करें. तो आपके पास एक फॉर्मूला हमने दिया था कि पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका ये किस ऑर्डर का है? दिस इज ऑर्डर ऑफ 1. ओके, तो फॉर्मूला है आपके पास कि 1 upon d of d1 of if we operating this on ax plus by, so this equals to 1 upon f of ab integral, and here we use n order integral, but here there is order is only 1, so here we use integral phi and function dv. ओके, सो अगर हम ये करें, यहाँ पे एफ ए बी मेरा क्या होना चाहिए? नॉन जीरो होना चाहिए. मीन्स यहाँ पे अगर हमने व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए हियर, सो हियर a equals to -2, b equals to 1. Okay, so a equals to -2 and d equals to 1. So if we putting here a equals to -2, so this becomes -2, and b equals to 1, so this becomes -3. So 2 minus 3, this becomes -1 here. Okay, so this equals to 1 upon d minus 2 d1, और ये यहाँ पे मेरा -1, so this becomes 1 upon
-1, इसको हम हटा दें, 1/-1, if you solve this thing, and this is your v, because v equals to y minus 2x. Okay, so if you only putting this thing, so this becomes integral v minus 1 dv. Okay, so if you solve this integral, this becomes this thing, and here 1 by v dv, that equals to log v, so this equals to log of v, and minus sign is there, so here we write here this is the minus sign. Okay, or you can write minus of log v. Okay, so now again we use this formula here. Okay, this formula. So now our particular integral, so what is our particular integral? So here particular integral equals to, if we take minus sign is outside, and here this d equals to a equals to -2, so you can write here -2 d1 equals to b, d1 means b. Okay, so this is your d, this is your d1, so d1 equals to 1 here, so this means you write here 1. Okay, and here log integral log of v. Okay, हेलो हेलो बताएं। सर, उसमें -5 होना चाहिए। -5 यहाँ पे हाँ सर। this is -2 minus, okay, -2 -5, correct। तो हम इसको कर लें यहाँ पे -1/5 मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, ऊपर कर लिया इसको, और नीचे इसको देख, ये तो ठीक आ रहा है ना, -2 माइनस यहाँ पे पुट ठीक किया कि नहीं किया? ये क्या है आपका, दिस इज -1/5, तो हम इसको लिख लिया 1/d -2 d1। स्क्रीन थोड़ी छोटी है इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रही है। 1/5 log of v मीन्स क्या है, दिस इज y minus 2x। ओके, y minus 2x। तो इसे हमने क्या किया, -1/5 को हमने बाहर लिख लिया, और फिर हमने क्या किया, a की वैल्यू -2 पुट कर ली और d1 की वैल्यू 1 पुट कर ली, ये हो गया, और log इंटीग्रल ऑफ log ऑफ y minus 2x। ओके, तो दिस इज बेसिकली v है, तो log of v dv। ओके, सो दिस इज log of that thing। okay, तो इसको हम लिख लें log of v dv, दिस इज log of v dv। ओके, ये 0 तो नहीं ना हो रहा, 0 तो देख लीजिएगा, ये 0 तो नहीं ना हो रहा, जैसे -2 -5। ओके, तो इसको आप से सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए, और अगर 0 हो रहा होगा तो वाली केस कर लीजिए, अदरवाइज ऐसे कर लीजिए। तो इसको सॉल्व कर लीजिए और फिर फाइनली v की वैल्यू क्या पुट कर लीजिए, y minus 2x, तो वो आपका सोल्यूशन हो जाएगा पार्टिकुलर इंटीग्रल, और यहाँ से आपका CF आपने निकाला ही है, तो जनरल सोल्यूशन आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, तो इतना करते हैं, फिर कल जो है, कल थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करेंगे, कल थोड़ा और हम चलेंगे नॉन होमोजेनियस इक्वेशन में, और कुछ कल प्रॉब्लम करा देंगे, और कुछ और फार्मूले भी हैं, उनको भी कल हम डिस्कस कर लेंगे। आज टाइम हो गए हैं, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। इसको आप खुद से आगे एक्सप्लोर कर लीजिए, इसको खुद से जरा कर लेंगे। आप log x का इंटीग्रल क्या होता है पता भी है या भूल गए? उस इंटीग्रल में log x आएगा। हाँ, log x का इंटीग्रल क्या होगा, कैसे करेंगे, तो उसको कर लीजिएगा। और उसमें एक बार चेक भी कर लीजिएगा कि जो हम पुट कर रहे हैं वहां पे FAB मेरा नॉन जीरो हो, तभी वो फॉर्मूला यूज होगा। अगर जीरो हो जा रहा है तो फिर हमारे पास वो फॉर्मूला जो है x to the power n, ओके, x to the power n upon factorial n b to the power n and that function phi of ax plus by, तो वो फॉर्मूला यूज करिए। और यदि वो नॉन जीरो है तो जिस भी ऑर्डर की वो आपकी वो d के साथ वो फंक्शन आ रहे हैं, तो f of ab is not equal to 0। अगर वो फर्स्ट है, अगर उसकी पावर 2 अगर आ रही है, 3 आ रही है, तो आपके ट्रिपल इंटीग्रल हो जाएंगे। अगर वो
सिंपल 1 है तो सिंगल इंटीग्रल होगा v फंक्शन ऑफ फाई एंड dv। ओके, तो इस तरह से आप उसे कर लीजिए, इस तरह से कर लीजिए, और कोई दिक्कत होती है तो फिर करते हैं। तो कल फिर हम 4 बजे थोड़ा और इसी तरीके कुछ और न्यूमेरिकल से उसको करा देते हैं। ओके चलिए सर। हाँ सर असाइनमेंट्स में जो आपने क्वेश्चंस दिए हैं, हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 एक बार सर थोड़ा चेक कर लेते हैं कि उसमें ईच टर्म मतलब सारे टर्म सही हैं या कुछ मिसिंग है। ओके, तो असाइनमेंट में कितने प्रॉब्लम दिया है हमने? 3 4 4 क्वेश्चन दिए हैं जिसमें 3 करने हैं। जिसमें से एक तो स्टेबिलिटी पे लिखना है, वो तो आप लिख ही लोगे सभी लोग अपने अपने हिसाब से। बाकी क्लिप्सिक कंडीशन पे है, क्लिप्सिक कंडीशन पे है। ओके यस सर। और भी प्रॉब्लम है तो उसको सभी आप खुद से, आपको जो ठीक लग रहा हो उसको करिए। हाँ, वो हर बच्चा क्या करता है यही तो मैं देखना चाहता हूँ। मैं असाइनमेंट में ऐसा नहीं देखना चाहता कि सभी बच्चे एक ही कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। तो हर बच्चे कुछ ना कुछ करेंगे ही, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत है। वो दिक्कत क्या सभी लोग वही करते हैं या अलग करते हैं? यही तो असाइनमेंट का मतलब है। ये तो मतलब नहीं ना असाइनमेंट का कि आप सभी शेयर कर लें आपस में, सभी के सभी उसको वो करें। आपको उस प्रॉब्लम में जो ठीक लगता हो, जैसा ठीक लगता हो वैसा आप उसका जवाब आप करो, या कोई उसमें प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ फिर। कोई प्रॉब्लम आ रही है उसमें? सर ऐसा लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। नहीं ठीक है, वो तो है, लेकिन आपको लग रहा है तो आप उसको मेंशन करो और हमारे पीडीएफ फाइल में भेजो और मैं उसको देखता हूँ। लेकिन जैसा आपको लग रहा है क्या वैसा 40 के 40 बच्चों को लग रहा है, ये भी तो एक क्वेश्चन मार्क है ना। इसीलिए तो असाइनमेंट दिए जाते हैं कि हर बच्चा अपना पहलू रखे, उस पर अपनी जो भी चीजें उसको समझ में आ रही है वो रखे। ठीक है, असाइनमेंट प्रॉब्लम इसलिए हम थोड़ा सा और भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि मतलब उस क्वेश्चन में कुछ है क्या, कुछ कमियां हैं, मैं मालूम है तो कुछ कमियां हैं तो आप उसको करिए। आपको जो ठीक लगता है, जो आप उसको रिफाइन कर सकते हैं वो लिखिए। इसलिए तो आपको सिर्फ और सिर्फ हमने 4 क्वेश्चन ही दिए हैं। ठीक है, आपको कुछ और लगेगा, दूसरे स्टूडेंट को कुछ और लगेगा, तीसरे स्टूडेंट को कुछ और लगेगा, किसी को बिल्कुल ठीक लगेगा, हो सकता है कुछ भी उसमें ना हो। ठीक है, ये तो हमने सिर्फ चेकिंग के लिए दिया है। अगर हमने एक क्वेश्चन दे दिया 2 + 2 क्या होगा, आप सभी 4 लिखोगे, सभी को 30 में 30 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, फिर ओपन बुक एग्जामिनेशन होगा। ओपन बुक एग्जामिनेशन में एग्जामिनेशन में वो चीजें नहीं होंगी, एग्जामिनेशन में टू द पॉइंट ही होगा, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं। एग्जामिनेशन में भी मान लिया सबको दे दिया, सबने बुक से और इधर से करके ले लिया, सबने 70 में 70 पा लिया। हर बच्चा 100 में 100 पाता है, या सपोज 100 में 90 मार्क्स भी पाते हैं, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं। आप जहां से भी यूजी करके आए होंगे, क्या हर बच्चा सेम मार्क्स पाया है? क्या हर बच्चा नहीं ना, कुछ तो डिफरेंस है। तो वही हल्का सा डिफरेंस के लिए ही तो थोड़ा सा चीज हम लोग चेक करते हैं, और कोई बात नहीं। और सर ग्रीन फंक्शन वाला सर बन नहीं पा रहा है सर क्वेश्चंस। ग्रीन फंक्शन भी नहीं बन पा रहा है। नो सर। अच्छा चल, ग्रीन फंक्शन बन गया। और क्या है लास्ट डेट क्या है आपकी फाइनल? 7। सर कुछ डेट बढ़ा दीजिए सर। बढ़ा देते हैं। चलिए हम ग्रुप पर डिस्कस कर लें। थैंक यू सर। थैंक यू सर।